Today we're going to prune a 6-year-old red Velox tree growing on M-9. आज हम जो है वो प्रूनिंग कर रहे हैं एक 6 साल ओल्ड रेड वेलॉक्स एप्पल वैरायटी की जो कि M9 रूट स्टॉक पे लगाया गया है. So first of all, let's look at the tree and see what issues we have to fix and what approach we will take. सबसे पहले हम प्लांट की तरफ देखेंगे कि हमें कौन से इश्यूज इसमें जो है वो फिक्स करने हैं कि किस तरह से इस प्लांट को जो है हमें प्रून करना है. So we have very good fruitful branches in the lower part of the tree. We have a crowded area in the upper part and some quite strong upright branches. And if we leave all of these branches, which are also growing fairly strongly, we will develop a canopy of shade, and all the spurs in the lower part of the tree will suffer in poor light and we'll lose our fruit size and fruit quality. So we have to make some intervention up in the top. जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिसकी जो लोअर ब्रांचेस हैं वो बहुत अच्छी डेवलप हुई हैं और जो अपर ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्राउडेड हैं, तो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा ताकि जो लोअर पोर्शन है उसमें जो फल लगेगा उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी बन पाए. We have a thumb rule for a mature tree like this to have 6 or 7 branches per metre of tree, and we are slightly over that target but not by much. So we're really looking to remove the worst 2 branches in the tree, and we should always remove the worst branches first. तो एक थंब रूल है इसमें कि अगर एक मैच्योर ट्री है कि उसमें कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, तो इसमें है कि 6 ईयर या उससे अबव जो प्लांट है उसमें 1 मीटर पे जो है वो 5 to 6 ब्रांचेस जो है वो टोटल होनी चाहिए, बट इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें जो अपर पोर्शन में है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा. So I'm going to do that now, and I'll use a bevel cut so that we'll get regrowth from the cut. Watch out, ma'am. It's coming your way. Thank you. So one there and a second one here. Thank you. इसमें जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थी और जैसे कि हम जानते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा जो है अगर वो हमारे ट्रंक पोर्शन से उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक विविल कट दिया है ताकि हम वहाँ से ब्रांच भी ले सकें और एक जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपराइट ब्रांच है उसको भी निकाल दिया. So very important to paint these cuts with a protective paint immediately. और इमीडिएटली जो है जो भी हम ये कट लगा रहे हैं इनको एक प्रोटेक्टिव पेंट से इमीडिएटली हमें इसे जो है वो कवर करना है. So next we have here quite a strong upright branch, but we have a big empty area here. So rather than remove it and lose the production from the good spurs here, I would like to bend this branch into position and tie it down. So to illustrate, I'll do it now, but the best time is in the middle of the summer or really any time when the leaves are on the tree. एक जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है जो अपराइट ग्रोथ है जिसकी, पर हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी है, तो इसको हम काटने के बजाय जिस तरह से हमने विविल कट दिया है पहले वैसे करने के बजाय जो है हम इसको टाई डाउन कर सकते हैं, इसको नीचे बांध सकते हैं. लेकिन ये जो विंटर टाइम है वो इसके लिए सही नहीं है, इसको हमें जो है वो समर में करना चाहिए और ऐसे किसी समय में जबकि इस पे पत्तियां आ चुकी हों तो हम इसको जो है वो नीचे बेंड कर सकते हैं ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो और स्ट्रॉन्ग भी ना जाए और ये अपराइट भी ना जाए. The string broke, so I'm going to tie it again. Okay, so we've now done the major important cuts. We have some overlapping of branches because of the close planting, but really we're not too worried about that. We can live with that. मेजर जो स्ट्रक्चरल प्रूनिंग थी वो हम कर चुके हैं, बट इसमें कुछ ब्रांचेस इस तरह से भी हैं कि जो ओवरलैप कर रही हैं क्योंकि हमारी जो स्पेसिंग है वो क्लोज़र है, तो इसलिए जो है पर हम इनको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी स्पर फॉर्मेशन है, तो इसको जो है वो हम अगर ओवर क्राउडेड है तब हम इसको निकाल देंगे, अदरवाइज़ अगर हमारे पास स्पेस है तो हम इनको छोड़ देंगे. So starting from the top and working down, first of all looking at the leader, it has developed good spurs along the whole length, so we don't really need to do anything with that. We can leave it unpruned. Next, and the string has broken unfortunately. Next we have 2 upright branches with spurs on them.
we would like to keep those and bend them down, tie them down next summer to make use of those because they're good replacement branches. अपर कैनोपी में अगर हम देखेंगे कि उसमें जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट 2 स्ट्रॉन्ग अपराइट ब्रांचेज जा रही हैं, इनको काटने के बजाय जो है हम वो समर में बेंड करेंगे और इनको जो है वो जिस तरह से इन्होंने पहले भी किया सुतली के साथ जो है वो टाई डाउन करेंगे नीचे की तरफ को, वही चीज़ हम उसमें करेंगे क्योंकि हमें फ्रूटिंग भी लेनी है. So moving down, these spurs are quite strong and there's a good balance of spurs, so there's really no detail pruning required. We can just leave them, let them set fruit, carry good fruit, and there's no detailed pruning required on these young branches. अगर हम मिडिल पोर्शन में देखें तो बहुत अच्छा स्पर फॉर्मेशन बना हुआ है और इसमें जो है वो डिटेल प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो स्पर है वो स्ट्रॉन्ग भी है और एक नंबर जितना चाहिए उस तरह से है, तो इसमें डिटेल प्रूनिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं है. If we move down to this branch, which is a flatter one, and being flatter, it's lower in vigor and it has developed just really too many spurs. So we would like to remove the ones that are underneath and shaded and get the number of spurs closer to the crop that we can carry on this branch. इस ब्रांच पे जो है वो लोअर पोर्शन में जो है वो बहुत सारे स्पर्स हैं और इसलिए जो है जो शेडी पोर्शन में स्पर्स हैं उनको निकाल दिया गया है, उनको काट देना है हमें क्योंकि उसमें जो है वो फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और जो अपर पोर्शन में जितना भी हम स्पर्स हैं वो हम इसमें छोड़ देंगे. And finally, when we come to the lower branches, here we are seeing the development of an excessive number of spurs, too many. If we leave all of them, we'll set too many apples and they'll be small with poor coloration. So again, I'm just going to remove the weakest and most underneath shaded spurs to get closer to our final crop. अब अगर हम लोअर ब्रांचेस में देखें तो इसमें जो है वो स्पर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. अगर हम इन सारे स्पर को रखते हैं इसमें जो फ्लावर आएंगे और जो फ्रूट सेट होगा तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो साइज़ के हिसाब से कम रह जाएगी. इसमें साइज़ बड़ा नहीं बन पाएगा ज़्यादा नंबर होने की वजह से, तो इसलिए जो वीक हैं और लोअर स्पर्स हैं उनको हम इसमें जो है वो रिमूव कर देंगे. And finally, and to illustrate with this branch, I won't prune the other branches on the other side, we can't reach them now. But here, again, we prefer not to do a heading cut which creates stiff upright growth. But because this branch is growing into the row alley, we do need to make a cut to keep it in its space. So I will make what I would call a compromise cut, like a Himachal cut, just to get the branch into the position. So I could either come out to this, I really have any choice along here because these are all good spurs, but we can, to maximise the crop, we can come back to here. It would be better to have a flatter spur, but anyway, this is okay. जो एक इन्होंने ये कट लगाया है इसको एक तरह से कहेंगे हम एक कॉम्प्रोमाइज़ कट है जो नहीं लगना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच में, बट क्योंकि ये रोज़ में आगे चला गया है जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए इन्होंने ये एक स्ट्रॉन्ग कट दिया है ताकि इसको हम एक वीक ब्रांच पे डाल सकें और हम जो स्पेस आगे की तरफ जिसमें ये वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ रही थी उससे रोकने के लिए. और क्योंकि ये बहुत नीचे इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे स्पर फॉर्मेशन है तो इसलिए सारे स्पर को रखते हुए जहाँ से वेजिटेटिव ग्रोथ है वहाँ से इसमें जो है एक कट दिया गया है. अदरवाइज इस तरह की स्ट्रॉन्ग ब्रांच में कभी भी हेड बैक नहीं करना है. And if I can't remember, did I say this? If we wanted to maximize production, we could tie this branch down into this space here. Okay. और अगर हमें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट लेना है तो इसको जहाँ पे भी ओपन स्पेस है वहाँ पे जो है हम इसे बेंड कर सकते हैं और इसको एक ओपन स्पेस में हमें इसे ले जाना पड़ेगा बेंड करके. So I think we're finished with this illustration, Yeah. unless there's anything I've missed, ma'am, or No. any points you'd like to make. Nothing. Okay. Thank you so much. All right. Thank you.